Good morning, children. How are you all? All are good? So, children, let's start this session with a prayer. Okay? So, join your hands and get ready for the prayer. Let's start, children. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasme Shri Guruve Namaha. Very good. So children, let's start with your English subject. Okay? Today we will start with your English subject now. Okay children? So children, in your English subject, we have started learning about the patterns, right? हमने patterns के बारे में learn किया और practice किया. So we will do a quick revision about the patterns that we are done with. Okay? You have to tell me which type of line is this? Yes, sleeping line. Which type of line is this? Standing line. Very good. Which type of line is this? Slanting line. But slanting line में भी मैंने बताया था ना कौन से टाइप का है? Slanting line from left to right. And this one is a slanting line from right to left. Very good. Now, in your last session, we have practiced this type of slanting line for making what? कौन सा लाइन बनाने के लिए हमने ऐसा पैटर्न ड्रॉ किया था? स्लैंटिंग लाइंस फॉर मेकिंग zigzag लाइंस, राइट? ऐसे टाइप ऑफ लाइन को हम क्या बोलते हैं? zigzag लाइंस. zigzag लाइंस बनाने के लिए हमने कौन सा टाइप ऑफ पैटर्न यूज किया? स्लैंटिंग लाइन. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? So these were the type of patterns that we have learned till your last session. So today we will learn one more type of pattern. Okay? So children, what you all can see on my screen, I have written curves. Today we are going to start with the curves. Okay? Now how will you draw a curve? You have to start from the top to bottom over here, right? ये दो पॉइंट मैंने आपको किया है. Okay, I have given you these 2 points. You have to draw a curve. How you will start from the top? In this way and end over here. Okay? Yes, this look like a C, right? Curve. This is called as curve. Start from one point. This is called as a curve. Understood everyone? Once again, see, in this way. What is this called as? Curves. Now even in curves, you all know, right, कि slanting line भी हमने, slanting line में भी हमने different type of slanting lines किया था. Slanting lines from left to right, slanting lines from right to left. Even मैंने आपको बताया था कि slanting lines towards upward, slanting lines toward downward क्या होता है, right? So today we will see the types of curves. Okay? Now slanting lines, जैसे type of slanting line बताया था वैसे ही मैं आपको बताऊंगी type of curves. Okay? First we will see the curve towards right. Okay? The curve towards the right direction. Understood? अगर मैं आपको कर्व बनाने बोलती हूँ तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे, राइट? सो ये राइट की तरफ फेस कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज कर्व टूवर्ड्स राइट. देन वी विल सी वन मोर टाइप ऑफ कर्व, दैट इज कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके? रिवर्स ड्रॉ करोगे आप ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे उल्टा. This is called as curve towards left.
लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है। मैंने क्लास में जूम सेशन में आपको बताया था ना, लेफ्ट एंड राइट पोजीशंस, है ना। So this is the curve towards right. Why? Because this curve is facing towards the right direction. And this is the curve towards left. Why? Because this is facing towards the left direction. Understood? Now curve towards right and curve towards left. Okay? Now let's see the next curve. So now children, the next type of curve. जैसे मैंने आपको बताया था कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट एंड कर्व टूवर्ड्स राइट, वैसे ही जैसे स्लैंटिंग लाइन टूवर्ड्स अपवर्ड था ना, वैसे ही कर्व टूवर्ड्स अपवर्ड। ओके, फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट, और ये ऊपर की तरफ फेस करना है इन दिस वे, कर्व टूवर्ड्स अपवर्ड। सिमिलरली कर्व टूवर्ड्स डाउनवर्ड कैसे होगा? नीचे की तरफ फेस होगा, कर्व टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ओके, उल्टा, ये नीचे की तरफ फेस हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर कर्व टूवर्ड्स डाउनवर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज फेसिंग इन द डाउन डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ फेस हो रहा है ना। सो दिस इज द कर्व टूवर्ड्स डाउनवर्ड एंड दिस इज फेसिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, अप, ऊपर। सो दिस इज योर कर्व टूवर्ड्स अपवर्ड। Understood everyone? Curve towards right, curve towards left, curve towards upward and curve towards downward. Okay, these are the 4 types of curves. Now as I tell you that you all have to practice properly in your 4 lines book. Okay, so let's see what pages you have to practice today for this topic in your shapes and color book. Okay, so children, this is your shapes and color book. Okay, in this book open to your page number 1111. Okay, now what is given over here? I am a curved line, I never stop. You can go around me side to side or bottom to top. It means this is a curved line, and once if you start drawing a curved line, she never stops. Okay, you can go around me, okay, from side to side or bottom to top. Okay, the 4 types of curve lines. So what you have to do here, trace the curve lines. So as I tell you, you have to start from the first red line. कर्व ड्रॉ करना है, पहले हम ड्रॉ करेंगे कर्व टूवर्ड्स राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन, passing through the first blue line and touching the second blue line. Okay, in this way you have to draw curve towards right. Okay, first red line से लेके second blue line तक आपको ये curve towards right draw करना है. Okay, similarly the reverse one, curve towards left, लेफ्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहा है. सो फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन टू द सेकेंड ब्लू लाइन, कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके, दिस इज योर कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? in this way. Okay, similarly once again you have to practice. Okay, so start doing it children. Okay children, you all understood? Now this is your curve towards downward. So कैसे आप ड्रॉ करोगे? आप सेकेंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करोगे उल्टा, टचिंग द रेड लाइन, फर्स्ट रेड लाइन, and again coming back to the second blue line. Okay, this is your curve towards downward. Okay,
सेकेंड ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन को टच करना है, फिर से ब्लू लाइन को टच करना है. देन दिस इज योर कर्व टूवर्ड्स. वेरी गुड. अपवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन, टचिंग द सेकेंड ब्लू लाइन, अगेन गोइंग अप. कर्व टूवर्ड्स, अपवर्ड. Okay, in this way you have to practice. Understood, children? These are the 4 types of curves. Curve towards right, curve towards left, curve towards downward, curve towards upward. Okay? Then after this, come to the next page. This is your page number 12. What you have to do here? हमने ऑलरेडी पैटर्न्स पढ़ लिए हैं. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व्स, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट ट्रेस द पैटर्न्स यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स. ठीक है? ये जो पैटर्न्स दिए हैं आपको, ये सब आपको ट्रेसिंग करना है. आफ्टर दैट you have to fill this part. I can trace and make sleeping line, standing, slanting and curve lines. Can you draw sleeping, standing, slanting and curve lines? Yes. अगर आप खुद से कर सकते हो तो यहाँ पे आपको टिक करना है. अगर मम्मा पापा के हेल्प से कर सकते हो तो यहाँ पे आपको टिक करना है. ठीक है? But make sure that you have to practice so that you can do it by yourself. That is, you can do it on my own. ठीक है? ये आपको हर एक टॉपिक में बताना है कि ये टॉपिक आप खुद से कर सकते हो या किसी के हेल्प से कर सकते हो. Okay, children? So start doing this now. So all of you can see that I have completed this page. Now, see. Over here, I have used little bit of standing line and curve. Okay, यहाँ पे this is a circle, but pattern देखोगे तो I have used this half curve towards downward, curve towards upward, normal circle. यहाँ पे कौन सा पैटर्न हमने यूज किया है? कौन सा लाइन? Slanting lines. Over here, standing line and sleeping line. This is your curve, curve towards upward, and this is your slanting line. Okay, half slanting lines. Okay, so these patterns we have drawn with the help of the lines. Okay, standing, sleeping, curves and slanting lines. Okay, so now over here, can I trace and make sleeping, standing, slanting and curve lines? Yes, I can. What I'll do? I will tick over here. If you can do with your help, आपको यहाँ टिक करना है. But I can do it on my own, so I'll tick over here. Okay? In this way, you have to complete today both these pages. 1, page number 11, page number 12. Okay? So children, I hope you all understood which all pages you are going to practice. So now take out your book and start practicing with the patterns. Okay? Thank you for watching this video. Bye-bye. Keep learning, keep practicing.